हम ए आशा समस्त रखुंट शिशिर किंतु अभिवृद्धि हवा पूर्व यह आकलन करा जे जो वी सेप कहुच्छी ये जो अभिवृद्धि संपूर्ण आहरी रसातल हम एवं तापर उठिबो किंतु अविनाश मुझे गोटे कथा सूचना देवा चाहिए गोटे साधारण लोकपाई बजेट होची जे तार दैनंदिन जीवन उपर कौन प्रभाव पड़ो अर्थात रोटी कपड़ा और मकान ये जो खाद्य बासगृह एवं जो तार पिंधापी जहाँ आवश्यक तार दैनंदिन जीवन पर आवश्यक ता उपरे बजेट कौन प्रभाव पकाउची जदि विचार को नवा खाद्य कथा देखा वर्तमान अन्नदाता माने वर्तमान आंदोलन में रचंती विभिन्न जो आईन करा जायछि से आईन को विरोध करके आंदोलन में रचंती केवल अन्नदाता मानकर कथा खाद्य जाएनी जाए मध्य दैनंदिन जीवन में चाउल ठू आरंभ करके डाली तेल लुण ए सबूर दरदाम एवं जो तेल जो गाड़ी आम चलाउछंती परिवहन पर जहाँ आवश्यक तैल तार मध्य दर उपरे मध्य रही समस्त नजर से भाव में अन्य सेक्टर में जहाँ बासगृह कथा कहुच्छी जमी एथर कहुई रियल इस्टेट गोटे बड़ फोकस से भाव में अन्य विभिन्न क्षेत्र को जदिव सरकार ध्यान देवे किंतु गोटे साधारण लोकपाई तार रोटी कपड़ा मकान पाई कौन प्रभाव पड़ुची ये बजेट रे तापर समस्त नजर रहिबो। निर्मला सीतारमण ए वर्ष अत्यंत आह्वानपूर्ण बजेट ये हम चैलेंज पूर्ण बजेट हम कारण ये जो महामारी जाइए ये आमर भित्तिभूमि संपूर्ण भूषुड़ी जाइए कहले भूल हम ना ताकू पुनरुद्धार करने आप जमी कहते जे गोटे वी सेप्र अभिवृद्धि आशा कर वी सेप अभिवृद्धि कथा जो कहुए संपूर्ण रसातल हो जाए पुणी से क्षिप्र बेगे उठे किंतु तापाई रोड मैप कौन से संपर्क में बजेट निश्चय फोकस कर निश्चित भाव में शिशिर जे आपन जमती कहते जे वर्तमान समय जो खाद्य वस्त्र बासगृह जो मौलिक आवश्यकता अच्छी ए मौलिक आवश्यकता को सरकार केते दूर पूरण कर पारुछंती एवं परवर्ती समय गोटे लोकर पिलाट पाठ पढ़िबो स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम वर्तमान समय तले एवं पिलामानकर पाठ पढ़ा एकदम चुली को जाइछि बोली कहा जाय परिबो किंतु कटकणा भितरे आमे वर्तमान समय स्कूल खोलिछंती ए स्वास्थ्य क्षेत्र ऊपर को फोकस मध्य दवा को पड़िबो शिक्षा ऊपर फोकस दवा को पड़िबो सरकार एठी मध्य 3 इडियट्स फिल्म रो उदाहरण दे कहितले जे स्वास्थ्य केते गुरुत्वपूर्ण वर्तमान समय स्वास्थ्य बजेट बढ़िबो ए नजर समस्त रही जब आप देखिए रोजगार कथा को देखिए जब सीएमआई रिपोर्ट को देखिए वर्तमान समय जो बेरोजगारी हार सर्वाधिक स्तर में रही 9% उपरकू रही तेणु ए बेरोजगारी हार को कमेवाई सरकार एजेंडा कौन खसड़ा कौन प्रस्तुत करफ्लेसन कथा शिशु कहते केमती दरदाम वृद्धि वर्तमान समय लोक चिंतार पकाई पेट्रोल डीजेल दर 90 उपर छुँची 90 पाखापाखि गोटे गोटे सिटी छुँची तो आपको नहीं सरकार रोड मैप कौन जदि पेट्रोल डीजेल दर बढ़ुची अत्यावश्यक सामग्री दर बढ़ खाद्य सामग्री दर बढ़ परिवहन को ये प्रभावित कर तेणु ये हूँ सरकार गोटे गुरुत्वपूर्ण फैक्टर जे ए दिगरे सरकार केते दूर काम कर मो दर्शक बंधु आपको किसी पॉइंट सामना को आने चाहिए वीडियो वाल जरिया बजेट 2020 जो फोकस पॉइंट वर्तमान समय आपको रखापी चाहिए कौन हो पारे सस्ता महंगा फर्निचर तंबा द्रव्य केमिकल दूरसंचार उपकरण रबर उत्पादित द्रव्य उपर नजर रही विभिन्न द्रव्य पर लगुवा कस्टम्स ड्यूटी कमाई पारती केंद्र सरकार ये केंद्र सरकार फोकस रखिंट हीरा एवं चमड़ारे तैयारी सामग्री उपर हटी पारे शुल्क कौन हो पारे सस्ता महंगा जो निर्मला सीतारमण पेड़ी उपर समस्त नजर रही रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन ड्राई मशीन भली सामग्री उपर केंद्र सरकार शुल्क बढ़ाई पारती शिशिर जो भाव में फर्निचर एवं तंबा द्रव्य केमिकल दूरसंचार उपकरण रबर विभिन्न कथा सस्ता हम बोली कहुच्छी विभिन्न द्रव्य उपर लगुवा कस्टम ड्यूटी कम कर पारती सरकार जो जो दरदाम कम हम हीरा और चमड़ारे तैयारी जिनस तार कथा कहुच्छी कोरोना देश में श्रम बजार व्यापक भाव में प्रभावित होती या निश्चय ए निसंदेह श्रम अभाव लोकंर रोजगार अहेतुक भाव में कमी लोक कामधंदा पाई ना पाऊना से विभिन्न योजनार आवश्यकता रही श्रमर चाहिदा वृद्धि भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में खर्च करने व्यवस्था करे श्रमर चाहिदा वृद्धि भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में खर्च जो सब व्यवस्था करा निश्चय जनकल्याणकारी हम कर कमेवाई सरकार रोजगार समर्थन योजनार विकास चिंता करेंगे गत डिसेम्बर सुधा कोरोना 3,87 लाख लोक रोजगार हर निश्चित भाव में शिशिर ये गोटे बड़ फैक्टर जो देखिए जिते रिवर्स माइग्रेशन है लोक मैंने घर को फेरुले स्वास्थ्य क्षेत्र जब आप देखिए वार्षिक खर्च एथर बजेट 2 गुणा हो पारे मुझे कहूली स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार फोकस अच्छी स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख कोटी अधिक टंकार बजेट आशा रही आप टीकाकरण अभियान वर्तमान समय चली कोविड आगामी समय कौ स्थिति नौ नुआ स्ट्रेन के प्रभावित करुच्ची 2020 भारत सब बड़ चैलेंज था स्वास्थ्य क्षेत्र हस्पिटाल अव्यवस्था सहित चिकित्सा प्रणाली दुर्बलता सामना को आसीला
धीरे धीरे जदिओ यहाँ सुधरा जाइतिला विभिन्न राज्य ओडिशा भली राज्य ए दिगरे बहुत भल काम करिसेंती स्वास्थ्य क्षेत्र पई बजेट रे बड़ घोषणा होई पारे कोन बड़ घोषणा होई पारे तापर निर्मला सीतारमण को नजर कैंसर हार्ट एवं किडनी रोगर चिकित्सा औषध सस्ता होई पारे ए नजर मध्ये रहउची सारा भारतवासी मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन देबा पई होई पारे योजना ये क्षेत्र को मध्ये निहात भाबरे नजर रखिबे भारत सरकार जदि सबटु बड़ फैक्टर देखिबे देश बाहर आसुथबा रोगी पई किछि योजना घोषणा करि पारंती सरकार शिशिर आपण जमते कहूतिले जे वर्तमान स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक फोकस करा जाय परिबो सेहि भली आहुरी विभिन्न क्षेत्र अछि जमते हॉस्पिटल टूरिज्म एवं एविएशन क्षेत्र को गति देबा पई सरकार करि पारंती बड़ घोषणा निश्चित भाव में होटेल एवं परिवहन क्षेत्र संपूर्ण भाव में शिशिर क्षतिग्रस्त होती आप जानिथिबे जे केमती जेतेबेले मार्च रे लॉकडाउन हैला एवं परवर्त समय सटडाउन करिया को पड़ला नाइट कर्फ्यू लोक माने कुआडे भी जाई पार नथिले पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देबा पई मध्ये सरकार चिंता करिवे कोरोना पे प्रभावित होइतिबा किछि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देवा कथा सरकार चिंता करछंती हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एवं एविएशन क्षेत्र को गति देवा पाई बोलिकरी जो योजना करा जिवो मो अविनाश एठी कहबा को चाहिबी जे सबु क्षेत्र किछि ना किछि भाबरे प्रभावित होइछि आ ताठु बड़ कथा होछि जे ए जो सब घटना घटिछि ये भिन्न भिन्न भाबरे ये घटना सब घटिछि कारण आपण देखिबे जे मुख्यतः चारिटी लेयर रो जो साधारण लोक से चारिटी लेयर रो साधारण लोक या द्वारा प्रभावित होइचंती से प्रथम लेयरटी कथा जदि आप विचार को नेबे जो माने दारिद्र्यर सीमा रेखा तले रहउचंती से लोक माने जो माने ताठु आ टिके उन्नत श्रेणी रे रहउचंती तापर गोटे मध्यवित्त श्रेणी आसुची तापर गोटे क्रीमी लेयर आसुचंती ए जो चारिटी पांचटी लेयर रो जनसाधारण रही से माने भिन्न भिन्न भाव में निज निजर आवश्यकता दृष्टि असुविधार सम्मुखीन होइचंती सरकार एथर बजेट रे से सबुजाक लेयर को बा समस्त को आड्रेस करने समस्त समस्या को आड्रेस करने उद्यम करेंगे जदियो कह जाए मिनी बजेट हम किंतु निहाती भाव में सरकार सामग्रिक भाव में ये समस्त किसी ना किसी व्यवस्था करेंगे आशा करा विशेष कर लोकंर जो आयकर जो स्लैब आम कहू टैक्स स्लैब बोलिकी से बड़ धरण परिवर्तन हम बोलिकी आकलन करा पूर्व विशेषज्ञ मैंने आकलन कर विशेष परिवर्तन हो पारे सर जो कथा आप कहते जे गरीब लोकटे ए बजेट रु चाहिबो एवं जो कथा बड़ बड़ इकोनोमिस्ट माने कहिसंती जे गरीब कल्याण जो योजना चलीथिला से गरीब कल्याण योजना केते दूर आगामी समय गति करूची मनरेगा आपण कहि पारंती पीडीएस र कथा कहि पारंती एवं सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट माध्यम रे लोकन पाखु टंका मध्य दैछंती ये होची गरीब लोकर कथा एवं परवर्ती लेयर को जदि आपण आसीबे निम्न मध्यवित्त लोकटे केमती कोन रोजगार करि परिबो रोजगार साधन ता पाखरे केमती पहुंची परिबो एवं मध्यवित्त वर्ग को जदि आपण जिबे से वर्गटी देखिबो जो माने सैलरीड क्लास रहिचंती समान बैंक रे जो टंका रखुचंती केमती सुरक्षित रहउची सरकार ए आश्वासन दे पारुचंती एवं अन्यपटे तांकर सुधर कथा आसुची एवं सबसे बड़ कथा होची जो कथा आपण कहउतले इनकम टैक्स रो कथा इनकम टैक्स रे केते दूर से रिहाती पाई पारुचंती एवं इनकम टैक्स तांका हाथ को टंका आसुची आपण देखिबे 2008 पर जतले रिसेशन रो परवर्ती समय गोटे बड़ फैक्टर रहउची जदि आपण देखिबे मोस्ट मिसिंग फैक्टर इंडियन इकोनॉमी रे जे लोकन को पाखो को टंका जाई पारलेनी टंका चलाचल ही पाले मो वर्तमान दर्शक बंधु को विजुअल देखा चाहिए होची वित्त मंत्रालय विजुअल ये विजुअल बयान करुच्ची जे निर्मला सीतारमण एकदम प्रस्तुत होउछंती संसद आड़ को ये पूरा नजर सीतारमण एथर ई पेडी अर्थात मैं कहूँ जे पेपरलेस बजेट जेहेतु होची ई पेडी रु कौन बाहर अनुराग ठाकुर अच्छंती जे रही राष्ट्र मंत्री ये वर्तमान समय चित्र जे संसद अभिमुखे निर्मला सीतारमण अनुराग ठाकुर एवं जदि देखिबे फिनांस डिपार्टमेंट ये अर्थ विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित अछंती एक लंबा समय धरी से जो अर्थनीतिर जो पूरा चित्र ये जो सबु कथा को से खंजी छंती एवं आज कौन उपस्थापन करुछंती तापर समस्त नजर ये प्रथम चित्र आम देखौचे जे संसद को जीवार चित्र निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अनुराग ठाकुर उपस्थित अछंती सारा भारत वर्षर नजर वर्तमान समय निर्मला सीतारमण को ऊपर रही एथर भारत वर्ष पई निर्मला सीतारमण कौन रखिछंती सबुठ बड़ कथा विभिन्न क्षेत्र पई कौन रखिछंती गोटे छात्र चाहूची जे शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन पई निर्मला सीतारमण को पेड़ी कौन आसुची गोटे शिक्षा व्यवस्था भितर थिबा टीचर टे चाहूची से मध्य तार साधन पई कौन आसुची सबुठ बड़ कथा स्वास्थ्य क्षेत्र को जदि आपण जिबे कोरोना जो भली भाबरे सारा भारत वर्षर इकोनॉमी को गोटे डिवास्टेटेड वे को नैछि से क्षेत्र केते दूर आगामी समय उधुरी पारुछि टूरिज्म एविएशन सेक्टर सेति पे अविनाश निर्मला सीतारमण आगुर सूचना दै सारछन्ते मु जेमति प्रथमरु कहउतली जे 100 वर्ष भितरे ये बजेट संपूर्ण नियारा बजेट हबो ये बजेट भिन्न धरणर बजेट हबो
प्रथम कथा तो आम देखुं बजेट को डिजिटल वे उपस्थापन करा पूर्व जमी उपस्थापन करा तार शैली परिवर्तन किंतु ता छड़ा तार आंगिक दृष्टिकोण बा कंटेंट दृष्टिकोण ये 100 वर्ष रे गोटे नुआ धरणर बजेट हम बोलिक कहुच्छे किंतु ये 100 वर्षर जो नुआ बजेट ए बजेट जनसाधारण केते उपयोगी हम उपस्थापन पर तो निश्चय जना पड़ो तापर तर्जमा हम किंतु वास्तव में जदि जनसाधारण विशेष भाव में उपयोगी न होता है ताहले लोक मैंने निश्चय हताश हे मु आशा करी निश्चय जे सबू कथा को आखि आगे रखिक एथर बजेट प्रस्तुत हो किसी समय पर निश्चय बजेट उपस्थापन है मैंने समस्ते जापर किंतु बर्तमान जेहेतु आम पाखे अतिथि मैंने अच्छा आपन को अनुरोध करी अतिथि निश्चित भाव में शिशिर आम सहित दिवाकर नायक अच्छा एग्रो इकोनोमिस्ट प्रोफेसर दिवाकर नायक को आम स्वागत करने चाहिए एभली एक बजेट सेशन को सर आपन को बहुत बहुत स्वागत मु प्रथमे आपण क्षेत्र ही आरंभ करने चाहिए जदि देखिए कृषि क्षेत्र ये कोरोना महामारी समय अभिवृद्धि देखी किंतु कृषि क्षेत्र बड़ चैलेंज जितेबाला लक्ष लक्ष कृषक आज राजरास्तार छिड़ा होती सिंगु बॉर्डर टिकुरी बॉर्डर अट्री बॉर्डर में ठिया होती केमती देखुंत एथर बजेट कृषि क्षेत्र किसी नहीं कि आसब कि कृषक समस्यार समाधान हो पार कि सरकार जो ट्रेंड सेट कर 2022 सुधा कृषक आय को द्विगुणित करेंगे ये लक्ष्य केते दूर पहुंचती स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट 2930 ओडिशार विधानसभा पारित तमाम कथा भर सार आसब प्रोफेसर नायक देखा ए वर्ष बजेट हूँ भारतवासी गोटे गुरुत्वपूर्ण सत कथा कहगले आमर सामान्य अर्थमंत्री भाषा ए वर्ष बजेट दिस बजेट विल बी लाइक नेभर बिफोर ये गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण जिनस अभूतपूर्व बजेट हम 2008-9 जो रिसेसन होता से जहाँ थिला वर्तमान समय आहरी गुरुत्वपूर्ण बहुत क्रिटिकल तेणु यही समय यही बजेट को आम कृषि उपर आलोचना करने पूर्व मु वर्तमान इकोनॉमिक स्थिति भारतर इकोनॉमिक स्थिति टिके कहूँ शुणवे वर्तमान हूँ देखु 2017-18 मसीह भारतर इकोनॉमिक ग्रोथ है 7% रु अधिका थिला 7% थिला 18-19 कमिला 6.1% है 19-20 लास्ट भाव को कोरोना अफेक्ट कला जहाँफल इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ 4.2% कमिला तापर आमर कोरोना पूरा खाली इंडिया नुहे पूरा विश्व को प्रभाव पकईला एवं अर्थनीति बहुत नष्ट है लॉकडाउन है तेणु यही समय बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गला तेणु जहाँफल 2020-21 इकोनॉमिक ग्रोथ 7% कंट्राक्ट कर 7.7% डिक्लाइन कर तेणु ये गोटे भारी इम्पोर्टाट जिनस एवं यही इकोनॉमी 21-22 रिबाउंस करिवो एवं एटा मोर देन 11% हो बोली प्रेडिक्ट डॉक्टर नायक कहा जाउची छे एथर भी शेप रो ग्रोथ हो ए जो भी शेप साधारण लोकंकर ज्ञान पाई कह जाउची आहुरी रसातल को जीव अभिवृद्धि अब तापर पुनी आउथरे उठिबो ये फार्मूला कोन एटी साधारण लोकंकर जानिबा पे सत कथा कहे गेले मु आउरी भलवारे ताऊ कहूची ये ए वर्ष जो रिकवरीटा हे देखंतु हमर 7% डिक्लाइन करछि एवं 21-22 रे प्रेडिक्ट करा होची इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मोर देन 11%। मु आपन को सहज भाषा कहूची ये जो रिकवरीटा को भी शेप कहूची एटा को भी शेप रे कहूची आर देखो मुझे आपको सहज कहूँ आमर आ भर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो क्रिकेट सीरीज होता ये जो 4टा सीरीज होता 4टा टेस्ट मैच होता गोटे इनिंग्स रे इंडिया थे 36 पॉइंट रे 36 रन ऑल आउट होता एक्जाक्टली अच्छा समस्त कहले गला खेल गला समस्त खेल बंद हो इंडिया 4टा टेस्ट रे हारिबो प्रथम मैच सेमती ए वर्ष फास्ट टू किंतु श्रीयुक्त नायक आपन जहाँ कहले जे क्रिकेट खेल भाया बजेट तो अनिश्चिततार जिनस नुहे बजेट हिसाब किताबर जिनस बजेट गोटे निर्दिष्ट विचार जिनस क्रिकेट खेल में अनिश्चितता थाई पारे किंतु बजेट रे अनिश्चितता हम अभिवृद्धि रे अनिश्चितता हम आपको ग्रहण करा जाई पारे कि ना ना मुझे कहूँ शुणु ए वर्ष फास्ट क्वार्टर है इकोनॉमिक ग्रोथटा 21 सेकेंड क्वार्टर रे 23% डिक्लाइन कला एवं तापर रिकवरी आरंभ है रिकवरी आरंभ हो नेक्स्ट 2 इयर्स भितर यहाँ हम
6.5 to 7%। सर जो डबल डिजिट रो ग्रोथ ए जो ग्रोथ टी को आपण केम देखुचंती गोटे माइनस कंट्राक्शन रु आपण 11 पर्यंत जिबे जदी आईएमएफ रो डाटा को देखिबे 11.5 से माने दउछंती ये संभव की वर्तमान समय रे ना एटा बहुत संभव तार बहुत इंपोर्टेंट होची एक्चुअली बेसटा बहुत कम थिला जेहेतु कॉन्ट्रैक्ट क्लास -7.7% तेणु बेसटा बहुत कमी आइছে तेणु 11% पॉसिबल तार कारण होची जो 20 लाख कोटी टंका इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर होची ए वर्ष बजेटटा सेडा सब रिफ्लेक्ट करिवो हमर सामान्य प्रधानमंत्री भाषा ये गोटे मिनी बजेट है से 20 लाख टंका जो इकोनॉमिक पैकेज है रिफ्लेक्ट करिवो एवं एग्रीकल्चर पे 1.63 लाख करोड़ सेटा जोटा अच्छे सेटा भी रिफ्लेक्ट करिवो किंतु बड़ कथा होची ए वर्ष इकोनॉमिक स्थिति देखिले ये जो आमे देखुचे इकोनॉमिक की नेक्स्ट ईयर ये हमर ए बजेट रे 21-22 रे इकोनॉमिक ग्रोथ मोर देन 11% हबो किंतु एई वर्ष कोन हेची आमे आज नवेम्बर जाए आमर जमा रेवेन्यू कलेक्शन हेची 40% आमे खर्च करिचु 63% खर्च करिचु तेणु आ फले कौन हम आम जो टार्गेट था फिस्काल डेफिसिट 3.5% रखा सेटा 6.5 रु टिक अधिक ये कोरोना पाई बोली करी जो रेवेन्यू कलेक्शन ह्रास पाइछि बोली कहा जाय परियो की हां निश्चित भारे सर गतकाली रिपोर्ट को जदि आपण देखिबे जीएसटी कलेक्शन 1.2 आसीछि जदि आपण देखिबे लाख कोटी ये आसुछि गोटे हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन ता पूर्वरु मध्ये आपण डिसेंबर जदि देखिबे 1.15 लाख कोटी थिला ये गोटे भलो खबर कि ता भितरे ना ये लोगों को ऊपर माड़ो नहीं नहीं ना ये गोटे भल खबर ये गोटे भल खबर आम इकोनॉमीटा इंडिया रे इकोनॉमीटा जो स्टेज अच्छी इमिडिएटली रिकवरी के आरंभ हो एटा गोटे सरप्राइज दबो मो मते जो क्रिकेट सीरीज रे 2-1 रे जीती सेमती गोटे देखैबो हम सहित जोग दैचंती विश्वदेव दास जोग दैचंती चार्टर्ड अकाउंटेंट मु तांको अति संक्षेप रे जानिया को चाहिबी जे आउ किछि समय पर निर्मला सीतारमण तांकर बजेट उपस्थापन करेंगे जमी कह जाऊला 100 वर्ष भितर एटा प्रथम गो नियारा ढंगर बजेट हम कौन आपण एक्सपेक्ट करुछंती जहाँ देशर स्थिति अर्थनैतिक स्थिति ता भितर निर्मला सीतारमण को पाई ए बजेट केते चैलेंज पूर्ण बा केते आह्वान जनक देखो बजेट तो मेन आमर जो आशा करिचे जे आमर 3 कोटी 3.5 कोटी 4 कोटी लोकंकर चाकरी पड़े आमर फर्स्ट आम बियॉन्ड ऑल दिस अकाउंटिंग कैलकुलेशंस जीडीपी केते कमिला जीएसटी केते बढ़िला बियॉन्ड ऑल दिस आमर प्राइम फोकस हवा कथा जे आम लोक मानकु अगेन वेदर वी आर इन ए पोजीशन टू रेस्टोर टू देम बैक टू जॉब और नॉट आमे देखो लास्ट 5 वर्ष 7 वर्षर जर्नी देखिए आमे स्टार्टअप को बहुत गुरुत्व देकी आसले स्टार्टअप रे जेमती स्टार्टअप केमती लोक आसबे केमती नुआ नुआ प्रोजेक्ट हम साइमल्टेनियसली आमे आउटे ता सांगरे पार्लाली ठिया करदेले आईबीसी कोड होची इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड माने एपटे स्टार्टअप करिवे फेल हेबे एपटे आईबीसी पास करिकिना पुणी मेन स्ट्रीम को फेरी जिवे सो ये जिनस गुड़िक दरकार माने स्टार्टअप देखो स्टार्टअप उपरे आमर जेतिकी फोकस थिला जे स्टार्टअप जदि आसीबो आमर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी जीवो आपण देखो समस्ते एवरी डे आम पाखे किछि ना किछि नुआ नुआ आइडिया आसछि किंतु से आइडिया को मैटेरियलाइज करिया कोले जण जनकर आइडिया पछरे मिनिमम 50 जन रु 100 जन नियुक्ति पाई जिवे सो सेही कॉन्सेप्ट रे नै करी जदि गवर्नमेंट ताको आउ टिके फर्दर प्यूरिफाई करंता आउ टिके फाइन ट्यूनिंग करंता ताले कोन होंता जो एक्सपेक्टेशंस रे जिंस गुडा को मूवमेंट करूची सेही एक्सपेक्टेशंस रे आगु को भी पळांता आम इकोनॉमिकल ग्रोथ होंता किंतु सर करंट सिनारियो रे स्टार्टअप रो आपण स्टाटस कौन देखुंती वर्तमान समय मे रे जदि आपण देखिबे 40% स्टार्टअप बंद हो गला कोरोना पाई किंतु काहे कि अधिक उधई परनी बोले आपण कहिबे आपण देखिबे जे 20 लाख कोटी जो आत्मनिर्भर पैकेज घोषणा हेतला एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट अप करिया पाई मध्ये अनेक किछि घोषणा हेतला किंतु अर्थनीतिक माने कहउचंती ए कागज कलम रे बहुत किछि होउची किंतु रियल रिफ्लेक्शन बहुत कम रहउची सुन तो पॉलिसी डिसीजन जो मैंने स्टार्टअप करथिबे से माने जानिथिबे जे पॉलिसी डिसीजन हे गला स्टार्टअप को इंसेंटिव दिया हबो स्टार्टअप को या बैंक फाइनेंस दिया स्टार्टअप को या फैसिलिटी दिया आप जो ग्राउंड रियलिटी को आसबे आपड़ जेकोसी कॉन्सेप्ट को लेकिन आसबे जे ना मुझे को स्टार्टअप करी बोली स्टार्टअप रे पुणी डिफरेंट आम ये आपण टीवी रे बहुत थर विषय आलोचना करछे स्टार्टअप रे विभिन्न अच्छी माने आपण ताको माने आपण जस्ट ए पीस ऑफ थॉट किंबा से माने तार इनफेंसी स्टेज रे अच्छी कि चलवा स्टेज को आसलानी सो स्टार्टअप रे विभिन्न स्टेज देकी रखिचंती किंतु स्टार्टअप रे एज इट इज से माने ताको रेगुलेशंस फ्री करिया को जाय किना सेथरे फुल रेगुलेशंस कर देले जदि कि गोटे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करिया को जीवो
he has to have lot of formalities. କିନ୍ତୁ ସରକାର ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ୱାନ୍ସ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେଠି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ଅନର କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ଅନର କରିବ। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ବଜେଟ୍ ଡିସ୍କସନରେ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ତାର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବା କଥା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ସର୍କଲ୍ କରିକିରି ବାକି ଯେତିକି ଜିନିଷ ତାର ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ କରୋନାରେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆର୍ଥ ପଲିସି ନେଇକି ଆସନ୍ତେ। ପ୍ରଫେସର ନାୟକଠୁ ମୁଁ ଟିକେ क्विकली जानिବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉଠିକିରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରକାର ପାଖରେ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ 63% एक्सपेंडिचर करूँ और 40% रेवेन्यू एपर्तंत जो कलेक्शन होती ये 4 मास भितर आम कौन कलेक्शन करूँ निश्चित भाव बहुत रिकवरी कर कि राजस्व आमर बहुत नियंट रहा फिस्काल डेफिसिट मुझे पचार साधारण लोकों दृष्टिकोण ये जो राजस्व आदाय चापटा जो सरकार रही सरकार साधारण लोक चाप पकड़े साधारण लोक तैल आदाय हो कि से डाली चाउल हो जो कर जमती लोक आदाय द्वारा हाँ ना शुणु बड़ कथा कहूँ जो राजस्व चापर सरकार गोटे कम करपारती एक्चुअली कौन है आम जहाँ कहले मोर बंधु जहाँ कहले बहुत लोग जो एम्प्लॉयमेंट लूज कर निम्न तल लेवल एवं गुड़े छोट छोट दुकानी ये सब तांकर से आज से प्री कोविड स्टेज को आसी पार ना किंतु गोटे बड़ कथा हूँ आमर इंडिया गोटा कहूँ जहाँ कहते बैंकिंग सेक्टर बहुत वीक है वीक नहीं आम बैंकिंग सेक्टर भारी स्ट्रंग एनफ आम बैंकिंग स्ट्रंग एत स्ट्रंग एनफ यहाँ गोटे इकोनॉमी की भारी पुश कर गोटे एग्जांपल दूसरी ये जो छोट छोट दुकानी एवं छोट छोट एमएसएमई जो अच्छा लोन देवाई आमर एप्रिल रु डिसेम्बर मास भितर जिते रिटेल लोन होची 29% किंतु विगत 10 वर्ष होता 20% था ये जापी आमर बैंकिंग सेक्टर इज स्ट्रंग एनफ टू गिव क्रेडिट टू दी स्मॉल एमएसपी जोटा कि लो लेवल लोक मानू एम्प्लॉयमेंट दब एक्टिविटी तार इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्री कोविड स्टेट को नहीं आसो ये सब जिन हो पार आ गए बड़ कथा हूँ ये जो स्टार्टअप किसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दवा कथा ये जो जहाँ कहले 40% स्टार्टअप बंद ही निश्चित भाव बहुत स्टार्टअप बंद होता व्यतीत गुड़े स्टार्टअप विभिन्न सेक्टर आरंभ करा पड़ो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप बहुत कम स्टार्टअप आरंभ करिया पड़ो आप कहते स्टार्टअप रे आम राज्य रे स्थिति कौन अच्छी आम सहित अच्छा प्रवीण गर्ग अच्छा राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभापति प्रवीण गर्ग अच्छी अच्छा श्रीयुक्त गर्ग आपको आम कार्यक्रम को स्वागत आपको जाना चाहिए जो कथा स्टार्टअप कथा कह दैनंदिन जीवन में बर्तमान रेगुलर बेसिस रे जो कोविड समय पर तार स्थिति देखिं कौन अनुभूति आपंकर? धन्यवाद। आमर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से घोषणा करी कि ऐतिहासिक बजट यही सरकार उम्मीद अच्छी सरकार उम्मीद खाली दरकार नहीं आम साधारण लोकर जो उम्मीद खरा उतरब तापर ऐतिहासिक बजट कहुब मु आपण को टिके कहूँ कि कोरोना रे जीतिकी इफेक्ट आर्थिक स्थिति रे आसी आपण सब जनाई क्या भी किसी कहबार दरकार नहीं किंतु यही विषय रे सरकार जदि इंफ्रास्ट्रक्चर रे जदि बढ़ेब नहीं आगु को आर्थिक स्थिति भल हेब नहीं एबे सरकार को दरकार कि इंफ्रास्ट्रक्चर जेती भी बढ़ेब ता आमर इकोनॉमी ग्रोथ करिवो आउ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हेबो लोगों को सुविधा पाइबो तापर मु कहूँ गोटे आम सरकार को थैंक्स कहबो एमएसएमई रे गोटे लोन रे कोरोना टाइम रे जो एफेक्टेड लोगों को पाई गोटे लोन रे नहीं कि आसी बहुत भलो से पॉलिसी नहीं कि आसी थी किंतु खाली जहाँ को लोन थिला ताकू पाई से आउ कोरोना रे तो एफेक्टेड ऑल इंडस्ट्रीज एमएसएमई इंडस्ट्रीज
जहाँ लोन नहीं नहीं ता कौन एफेक्टेड है ही नहीं तांको भी लोन दरकार एटा गोटे सरकार को चिंता करबा दरकार किंतु आपण एक्सपेक्ट करूचंती कि आपण आशा करूचंती कि आपण जो कथा कहउचंती जे जहार इफेक्ट हेनी बा जे प्रभावित हेई नांती सेमानकु मध्य ऋण आवश्यक एवं एई थर बजेट रे से भली कोनोसी व्यवस्था हबो बोली करी निश्चय दरकार एकदम एबे मु आपन को कहूची हम जो इनकम टैक्स रो स्लैब अछि हमर 5 रु 10 लाख डायरेक्ट 10% रु ऊपर नेबा दरकार नहीं 10 रु 20 लाख पिछे 20% मैक्सिमम साइड दरकार तापरे हमर जो गोटे सरकार गोटे नियम नहीं के आसी थिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तांको इनकम टैक्स घोटे छी जदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकम टैक्स घटे ताहले इंडिविजुअल मैन को और पार्टनरशिप को भी कहीं की घटा हेबो नहीं तीनों सेम स्ट्रक्चर रखिबो दरकार जदि सरकार को टंका दरकार एटीसी रे 1.5 लाख करिछि जदि एटीसी रे 3 लाख कर देबी सब लोग को सरकार खाता रे टंका 100% जमा करबी सरकार पाखरे टंका आसीबी सरकार टीसीएस गोटे नहीं के आसी टीसीएस सरकार आगुरी कही जीएसटी गोटे साधारण टैक्स गोटे टैक्स इंडिया रे गोटे टैक्स हेबो साधारण हेबो किंतु एबे छोटे छोटे टैक्सटा आम जमती प्रोफेशनल टैक्स पेड करुच्ची एबे टीसीएस टैक्स आसी जाइए कहीं गोटे टैक्स रे कहीं बिजनेसमैन को दू नहीं जीएसटी रे भी जहाँ 3 वर्ष 4 वर्ष हो जाए जीएसटी रे भी ए पर्यंत क्लियरिफिकेशन नहीं आमको जेतिकी डाटा सबमिट करबा पड़ुची गोटे जगह नहीं केते जगह सबमिट करो पड़ुची आपण कहउचंती सर जीएसटी रा सरलीकरण आवश्यक जे प्रत्येक लोक केमति सरल भाव रे जीएसटी बा कर से देई परिबो ता ऊपर नजर रखिबार आवश्यकता अछि मु गोटे छोट विरतिर समय होईची आमे शिशिर गोटे ब्रेक नबा किंतु तापरे विश्वदेव दास को निकट को फेरिबा विश्वदेव दास सर मध्ये कहिबे जे प्रकृति रे जो मिसिंग फैक्टर रहिची जे लोकन को पाखरे टंका केमति पहुंचीबो लोकन को हाथ को लिक्विडिटी केमति आसीबो मार्केट को ये ऊपर बड़ फोकस रहिबार आवश्यकता अछि जहां निर्मला सीतारमण को पाखरु अपेक्षा रहिची सारा भारत वर्ष गोटे छोट विरति खूब शीघ्र दर्शक बंधु विरति पर आपको स्वागत दर्शक बंधु रेलवे चित्र में आपको समय वर्तमान समय देखा चाहिए रेलवे ओडिशार कौन एक्सपेक्टेशन अच्छी कांग्रेस को जो देखिए 10,000 कोटी टका मागी जदि राज्य सरकार एक्सपेक्टेशन देखिए राज्य सरकार वर्तमान समय जी मागी 7,200 कोटी मिल पार्टी कि ये तमाम नजर 2019-20 अनुदान तुलन में कम था जदि देखा पूर्वोत्तर रेलपथ व्यय बराद होता 5,865 कोटी टंका एवं ओडिशार 2टी नुआ रेल लाइन को अनुमोदन मिलता जदि गत थर देखिए नुआपड़ा गुणपुर थेरुवाली रेल लाइन को भी अनुमोदन मिलता गोपालपुर संबलपुर भाया फुलबाणी 241 किलोमीटर पर्यंत मिलता 1620 कोटी टंकार अनुदान ह्रास पाई दर्शक बंधु मुझे खाली आप गोटे जिन जनाक चाहिए जदि आप 2020 को आप देखिए 4,373 कोटी टंका ओडिशा को मिलता किंतु मागिला ओडिशा 6,000 कोटी जदि एनटीपीसी झारसुगुड़ा बरपाली कोल कॉरिडोर में देखिए 1,400 कोटी टंका इन्वेस्ट करिछि एवं 2019 5,993 कोटी 2018 5,252 कोटी 2017 5,102 कोटी 2016 को जब देखिए 4,682 कोटी 2015 3,712 कोटी ये हूँ रेलवे रे जदि आप देखिए ओडिशा सरकार एथर 7,200 कोटी टंका मागिछंती कांग्रेस मागी 10,000 कोटी टंका जदि ओडिशार दल हिसाब से आप देखिए तेणु केते मिलुछि ता ऊपर समस्त नजर शिशिर निहाती भाव में रेलवाई गोटे बड़ क्षेत्र जो थे यही बजेट रु आशा कर विभिन्न राज्य आशा कर रेल क्षेत्र को विकसित करने एथर ओडिशार जो दाबी रही रेल क्षेत्र बोलिक आशा कर निर्मला सीतारमण बजेट रे तार निश्चय प्रतिफलन आसो मु अविनाश कहवाक चाहिए आम सहित अच्छा डॉक्टर विजय साहू अच्छा नटवर खुंटिया अच्छा से कौन एक्सपेक्टेशन रही रेल बजेट रु कारण बजेट भाया पूर्व एथर जदिव अलग अलग बजेट होनी रेलपाई अलग और साधारण बजेट अलग होनी किंतु तथापि रेलवाई गोटे बड़ क्षेत्र जो थ्रु समस्त आशा थाए भित्तिभूमि विकास हेले विभिन्न प्रकार विकास घटिपे श्रीयुक्त साहू मुझे आपको जाना चाहिए रेल क्षेत्र बोलिक ओडिशा सरकार एक्सपेक्टेशन अच्छी किंतु ओवरऑल देखा बेले भित्तिभूमि गोटे बड़ अंग होची
परिवहन एवं रेलवाई गोटे बड़ परिवहन क्षेत्र तार विकास पाई कौन आपन देखुचंती ए बजेट रे रूपरेख ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଗତ 30-35 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଆକଳନ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ବହୁତ ଉପାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଆଭରେଜ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 850-900 କୋଟିର ଆଲୋକେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ରେଳବାଇରୁ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 4,500-4,300ରୁ 5,500 ପାଖାପାଖି ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ जो आमर डिमांड करा जायछि प्राय 7,200 कोटी सेटा बहुत जरूरी कहीं जरूरी खाली एटा ओडिशा पई जरूरी नुह आपण जे देखिबे जो ईस्टर्न कॉरिडोर अच्छी वेस्ट बेंगल रु नेकरी चेन्नई पर्यंत जो कॉरिडोर अच्छी से कॉरिडोर रे जदि आपण माल परिवहन देखिबे ताहले एई पर्टिकुलर आमर जो ईस्ट कोस्ट रेलवेज तार जो परिवहन विजाविज तार जो इनकम जनरेशन भारत रे प्राय प्रथम 1 नंबर 2 नंबर आसीबा सेही तुलना रे जदि आपण देखिबे बजेट रे जो एलोकेशन करा जाए ओडिशा को सेतिके एलोकेशन करा जाय हमर कहा जाउतला आमे देइछु हमको दियो से न्याय रे आपण कहउछन किंतु ओडिशा भितरे मध्य रेलवाई रो जो नेटवर्किंग सी एते बेसी भलो नाही अन्य राज्य तुलना रे देखिबा अनेक जिला को भी पहुंची पारनी हमर जदि देखिबे ओडिशा रे मात्र 20% जिल्ला रे रेलर सुविधा अछि हमर जो पर्टिकुलर कॉरिडोरटा अच्छी जो जेहेतु मत लगुच जेहेतु कलिकता को चेन्नई सहित जोड़बार था से ओडिशार किसी जगह जोड़ी होगा अदरवाइज ओडिशा पूरा उपाकित होता तो बर्तमान किंतु ओडिशार जो वेस्टर्न ओडिशा सदर्न ओडिशार किछि पार्ट जदि आमे विकसित करने को चाहिबा ताहले से रेलर भित्तिभूमि जदि आमे सुदृढ़ न करिबा रेलटा होची हमर जेते गुड्स कहतु पैसेंजर कहतु सबुर ट्रांसपोर्टेशन मुल आ भारतर जेते प्रकार मिनरल्स अच्छी सबू मिनरल 80% पर्टिकुलर आयरन ओर तो हाईएस्ट बक्साइट रो तो हाईएस्ट मैंगनीज रो तो हाईएस्ट तो जदि आमे आमर माइनिंग सेक्टर को जदि भारतर सबू इंडस्ट्री को भी पहुँचा चाहिए ताहले भी रेलर भित्तिभूमि दरकार तो मत लगुच कौटी ना कौटी आमर जो डिमांड रोची रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करवा सेटा बोधे ठीक भाव में हो पारे ना बजेट गोटे तू मे रहुची जे सरकार कहउचंती आमे जमी जोगे दउछु एवं सेमाने सरकार मागणा रे जमी जोगे देबार कथा कहउचंती एवं 50% खर्च वहन करिवे एकथा मध्ये कहउचंती मु आसीबी नटवर खुंटिया निकट को किंतु अवनी रंजन महापात्र हमर राउरकेला प्रतिनिधि सीधासलख जोड़ी होचंती आम सहित राउरकेला रु अवनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रे प्रतिक्रिया आपण नियंतु तीव्र प्रतिक्रिया आम सहित अवनी मध्ये रहुचंती कोन प्रतिक्रिया रखुचंती सेठी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रे अविनाश देखु आउ कि समय पर केन्द्र बजेट आगत हम राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पक्षर ये सीधा आयोजन कराई जो कर्मकर्ता मैंने उपस्थित अच्छा से अपेक्षा कर बजेट रे कौन आसूची कौन सुविधा सुजोग रही बजेट रे कौन से शिल्प क्षेत्र में कहतु रेलवे क्षेत्र में कहतु कि साधारण जनता कौन हम से नहीं से अपेक्षा कर रही आप कौन कहे कौन आशा रखुंट भाई आमर आशा पोस्ट कोविड-19 पर जहाँ अच्छी सेटा अच्छी भैट रे किसी रिलैक्सेशंसटा मिलू ये जीएसटी रे आ पेट्रोल डीजल ये सब जहाँ दामटा बढ़ी रही तादेरे भी एक्साइज ड्यूटी कि जहाँ अच्छी सेटा को भी टिके कम करार अच्छी हेले से टिके बूस्ट मिलो इकोनॉमी को सेटा वर्तमान जहाँ वी ग्रोथ चली इकोनॉमी रे सेटा सस्टेन करिया होची मेन सेटा को सस्टेन करने ये दुटा जिनस करवा निहायती दरकार सेटा हमर एक्सपेक्टेशन अछि कौन आशा रखिछथि बजेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेटा कि बहुत ही एवं दरकार गवर्नमेंट लास्ट 2-3 वर्ष रे जहाँ भी जिते लॉ एंड एनेक्टमेंट सब कर बिजनेस हैज रियली बिकम डिफिकल्ट तो आम चाहूँ कि ये बजेट एमती सब प्रोविजन सब अणा जाऊ ताले कि ये मीडियम स्मॉल बिजनेसमैन से मैंने बहुत से रिलैक्सेशन पाइबे मेनली हूँ जिते लीगल कंप्लायंसेस सेटा जदि कम न करागला तो आम बिजनेस करि पारुनु बिकॉज आमर मेजर टाइम खाली से कंप्लायंसेस रे ही जाउची तो सेटा आमर मेन प्रायोरिटी रहिबो एज ए बिजनेसमैन प्लस इंटरेस्ट रेट रे ड्रास्टिक रिडक्शन दरकार कहीं एते हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन नहीं कि आउ काम करि होनी बिकॉज मार्जिन्स आर गेटिंग थिनर और मार्केट रे कंपटीशन बहुत बढ़ुची एंड इफ यू वांट टू कम्पीट विथ द वर्ल्ड आउटसाइड जोटी कि इंटरेस्ट रेट 0 अच्छी कि 1 अच्छी कि 2 अच्छी आम ये 12% 11% इंटरेस्ट देकी बिजनेस केमती करूँ तो दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर
अनेक आशा रखिंट निश्चित भाव में किसी आसो आप कौन आशा रखुंट Ease of doing business is most important, and secondly, government spending has to be enhanced, because the government, if the government is spending, that money will come down to the people, to the industry, to the business. तो सेटा जदि हम तो आमर इकोनॉमी पाई टिके लिक्विडिटी बढ़िबो और जो पैसार क्रंच अच्छी सेटा खत्म होबो और सेकेंडली एमएसएमई इंडस्ट्री रे स्टार्टअप रो थ्रेशोल्ड लिमिट्स टा 40 लाख को बढ़े कि 100 लाख करवा कथा और प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव को छाड़ी की और प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव टा एडॉप्ट करिवार अछि इंस्टेड ऑफ इनपुट बेस्ड इंसेंटिव दैट विल बी गिविंग बूस्ट टू द एमएसएमई इंडस्ट्री। राउरकेला शिल्प बणिक संघर जो कर्मकर्ता मैंने अच्छे से अपेक्षा कर किसी समय पर बजेट आसो कौन सुविधा रहा कौन आशा रखिंट कौन सुविधा बोले भावुं See, this is going to be a very unique budget, as the finance minister said few days back that this will be an historical budget with 100 years perspective, and there are a lot of expectations, and because of this corona pandemic, we are expecting a lot of expenditure in this health sector. Currently, the government is spending about 1% of its GDP in health sector. It should be doubled. Because of, see, in US, they are spending 19% of their this in health sector, so it should be improved. And in taxation front, we are expecting a lot of tax rebates, especially in direct taxation side. If there is a rebate, there will be more money in the hands of people, and it will increase demand. And increase in demand is very important for the revival of the economy. So लोकों को हाथों को केमती टंका आसीबो मार्केट को लिक्विडिटी आसीबो ता ऊपर अबनी समस्त नजर रहउची अबनी आपन को धन्यवाद देवा चाहिए वर्तमान समय पुणी परवर्त समय आपण फेरिबु जेतबेले बजेट घोषणा हेबो कोन नजर रहउची किंतु निश्चित नटवर खुंटिया एठी मोर आपन को प्रश्न जे रेलबाई कथा जेतबेले हम आलोचना करतले सरकार कहउचंती हम एतिक टंका ओडिसा को देदेलु सेतिक टंका आंध्र को देदेलु जेमति हम आत्मनिर्भर पैकेज देखिले 20 लाख कोटी किंतु खर्च होला बेलकु तार जो पैसाटी आपण जानिथिले हुए तो एटा गोटे पॉलिटिकल गोल हो पारे विरोधी ऊपर स्कोर करने किंतु ये जो संख्या खेल में सरकार बहुत किसी छपेवा चेष्टा कर बहुत किसी चापिवाई भी चेष्टा कर कहे रेलबाई क्षेत्र में ओडिशा को गोटे जब नेग्लेक्ट कर आउ को स्टेट नेग्लेक्ट करा जाए मु 70 मसीह बैंक रे जॉइन कली कलिकता पोस्टिंग हेली मोर बंधु सी आसुँच 90 किलोमीटर दूर सी आसी ऑफिस कर पड़े मुझे आश्चर्य हेली आमर कटकरू केन्द्रापड़ा लोक किए आसुनी भड़ा नहीं रोचे सी लोक 90 किलोमीटर सका उठिकी सी आसिक ऑफिस करी मो सागर ऑफिस करी सी सन्दा जा घरे पहुँच 90 किलोमीटर कहीं जेहेतु रेल एक्सपांशन आमको 27 धरिकी आमको नेग्लेक्ट करा को रेल जदि मद्रास कि जो कलिकता मद्रास पद न था आम न था रेल से बम्बे न था दीदी थर रेल मंत्री होती नेता माने विभिन्न समय खाली रेल मंत्री है आपड़ प्रेसर पकेबार अच्छी अच्छा आपड़ प्रेसर न पकड़े हेनी पार्टी न कले किए देवेनि तो प्रेसर आगु किसी खुंटिया गोटे कथा जहाँ अविनाश से कथा उठाऊले जे रेल बजेट जहाँ टंका आसूची ताकू गोटे वर्ष भितर भी सरा जाई पारुनी द्वितीय कथा आ गोटे कथा उठुची जो जमी कथा उठुची से कोटी ना कोटी टिके विलंब हो खाली टंका आलोकेशन हेनी यहाँ हूँ गोटे जॉइंटली स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट जॉइंटली काम करा मो मत प्रति मास मीटिंग हुआ उचित गोटे लियासन अफिसर गवर्नमेंट ओडिशा गोटे सीनियर लेवल से खाली नाम मात्र अन्य डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ओडिशा कथा नहीं जदि केंद्र सरकार समग्र देश में आप स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छी दी जन ऑफिसर बराबर बसिक कौटी समस्या है कौन है कहीं होनी टंका आलोकेशन खाली किसी लाभ ना समस्या कौन आम कोअपरेट करा उचित आम विरोध दल कि गवर्नमेंट दल जो जमी अध्यक्ष कोअपरेट करा उचित आम खाली विरोध कले हेनी खाली जमी पड़ेगा आड़े कहते रेल हो जमी पड़ेगा असुविधा होती तेणु से गोटे समग्र सोसाइटी खुंटिया आम पाखे बहुत कम समय अच्छी पोस्ट बजेट उपस्थापन होगापाई से पूर्व खाली टे जाना चाहिए जे राज्यर जो गोटे सेयर थाए केंद्र सरकार बजेट रे राज्य को मध्य किसी तार अंश दियंती बा तार अनुदान प्रदान करती यही थर राज्य विभिन्न राज्य को एवं विशेष करी जदि ओडिशा कथा विचार को निया जाए ओडिशा मध्य ए पैंडेमिक रे बहुत असुविधार सम्मुखीन होईची बहुत आर्थिक समस्या देकर गति करची कौन एक्सपेक्टेशन राज्यर
नरेंद्र मोदी आसिले प्रधानमंत्री होकर 2014 आ जेहेतु ता आगुरी से राज्य संभाली थिले गुजरात मुख्यमंत्री हिसाब से जानी केन्द्र रू पैसा आनी राज्य खर्च करवा केते कष्ट से देखते ओपनिंग स्टेटमेंट से देते जे आम गोटे सेंट्रल पूल करूँ आ गोटे फर्मुला करूँ जो राज्य को भिक मागे पड़ोनी। अच्छा से प्लानिंग कमिशन को से एबोलिश करते FRBM रे आखि आगे रखी से कहले जे अबाउट 41% डेवलपमेंट हम टू द स्टेट सो मोटो किंतु देखागला जे जो GST रो कमिटमेंट 5 वर्ष देले आ GST जो भाई भाव में स्टेबिलाइज कर पारला नहीं लक्ष्य उपर को टपिला यही प्रथम थर पर लक्ष्य उपर को लक्ष्य 20 गतकाली जहाँ रेकर्ड आसी तो वर्तमान जेहेतु से केन्द्र पाखे से पैसा नहीं दवापाई आकलन जोटा करा जाउची एथरक बजेट ओडिशा बजेट देखिथे आमर आकलन होती आम मिनिमम अबाउट 37,000 करोड़ पाइबा सेंट्रल शेयर किंतु मते लगुच एटा पाइबारे डेरी हो पारे कारण केन्द्र पाखे से पैसा थिबा दरकार राज्य को ठीक टाइम रे दवापाई से देखिए जो सेंट्रल स्कीम गुड़िक होची सेंट्रल स्कीम जो आगु 90-10 थिला से गुड़ाक सब बर्तमान 60-40 रे 40-50 रे आसी पहुँचलानी तो आमे तो बड़ बड़ योजना ना करुचे योजना सबू बजेट रे दौचे किंतु से योजना कहीं प्रतिफलित हो पार नहीं कारण जो पैसा आसवा कथा से योजना सेटा आसी पार नहीं किसी क्षेत्र में पैसा आसिले भी से जो प्रकार भित्तिभूमि दरकार जोटा डेरी हो जाउची सेटा नेक्स्ट बजेट को पड़ोची टाइमिंग को नहीं की समस्या हो दी प्रकार प्रॉब्लम होची टाइमली पैसा आसीबार प्रॉब्लम होची एवं पैसा आसुची जतबेले सेतबेले आउ 2-3 मास रहउची आपनकर नेक्स्ट बजेट आसिया पे सो दीटा रे आपनकर प्रॉब्लम होची तो जीएसटी रे ओडिशा जीएसटी संग्रह रे बहुत आगे रही तो ओडिशा को किसी अधिका से बाबद मिलवार आवश्यकता अच्छी भावुची ओडिशा तो आकलन कराई प्राय 5,000-7,000 कोटी अधिका आसियो बोली बिकॉज ऑफ हायर जीएसटी आमर आयरन और ऑक्शन रे भी 7,500 कोटी अधिका आसियो बोली आकलन कराई आगु को चाहे जना पड़ो कारण एवं मुझे देखिली गत 2-3 दिन भितर बहुत पेनाल्टी इम्पोज कराई आयरन और जो मैंने सब नहीं ऑक्शन रे से माने उठे पारे ना से नेगेटिव लिफ्टिंग पेनाल्टी होती मैंने कौटी ना कौटी प्रॉब्लम्स अच्छी खाली आम सबू जिनस कागज कलम रे रखले हेनी कारण इंडस्ट्री एब्जर्व कर पारुनी इकोनॉमी प्रोपेल कर पारुनी आमे जदि खाली हिसाब पत्र करी कहबा एटा हवा दरकार ताकू मार्केट एक्सेप्ट करिया दरकार आ सेटा पई गोटे टाइम दरकार लोकों पाखरे जो जेमती कहले एबे जदि गोटे साधारण लोक को बर्तमान पचारे बजेट तोर आशा कौन से मोर मोर प्रथम हूँ मो केमती कम टैक्स देवी केमती मोर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़िबो केमती स्लैब टिके कमिबो केमती मु जो शेयर मार्केट रे पैसा लगाऊँ से जो टैक्स दवा पड़ी सेटा टिके कमिबो हाउसिंग उपर मोर केमती टिके इंटरेस्ट कमिबो एबे कोरोना रे बहुत हेल्थ एक्सपेंडिचर हेगला 80D लिमिटा केमती टिके बढ़ी जिवो 80C जो बढ़ी ना बहुत दिन है 1.5 लाख सेटा केमती 2.5 लाख हम सो दैट पिला मानक पाठ पढ़ा रे केमती टिके हेल्प करिवो स्टैंडर्ड बेसिक लिमिट जोटा 2.5 लाख अछि सेटा केमती 5 लाख हम साधारण लोकंकर एई गुडी मत लागछि एई दिगरे मध्य देखिबे बजेट रे साधारण लोक निर्वाचन वर्ष थाए जेतो निर्वाचन वर्ष थाए से वर्षर बजेटा को हम पॉपुलिस्ट बजेट बोली कहू बा जनप्रिय बजेट बोली कहू किंतु निर्वाचन छड़ा अन्य वर्ष गुड़िक जो बजेट उपस्थापन हुए निर्वाचन वर्षर बजेट एवं अन्य वर्षर बजेट भीतर किसी फरक थाए एक कथा आपण विचार करते कि देश में जो पॉलिटिकल पार्टी हो देशर विकास पे जी चिंतित नुहति केमी संख्यार आसो अधिक आसो कहला दो तेणु आम लोक प्रशंसा मिलने भोट मिले केमी आम लोक मत सेमती यदि सामान्य किसी सुविधा देवे कि बेसी जिन किसी उपकार होनी आम भोट देवु तेणु यहाँ गणतंत्र तेणु संख्यार खेल तेणु संगे चेष्टा करती किंतु जदि निर्वाचन अन्य वर्ष जमी हार्स हम कथा हार्स होना केते जिन आप गोटे मेडिसिन खाऊँ पिता लगुच कि स्वास्थ्य हितकर ता जाणिक जी सरकार जो पार्टी सरकार से दौनी सी खाली केमी पपुलिस्ट ही भोट पाइबे लगी मुझे कथा आप एग्जाम्पल दूसरी आप जो लक्ष्य संख्यार आमर एसएचजी ग्रुप वोमेन से दे हैज बिकम नाउ दि मनी लेंडर आप जानते विजय जानते मनी लेंडिंग एक्ट नहीं से मनी लेंडिंग कर ट्रेनिंग दि जाए कि प्रदर्शन करेंगे सिक्त साहू जाना चाहिए जे निर्वाचन वर्षर बजेट बा निर्वाचन पाखापाखि वर्षर बजेट आउ ये बजेट भीतर कौन फरक थाए देखु निर्वाचन बजेट सब लोकाभिमुखी थाए कारण भोट
कॉमन मैन रो वोट नवा पड़े से कॉमन मैन को फोकस करा जाए रूरल डेवलपमेंट को फोकस करा जाए एवं बेसी केमिति कॉमन मैन पाखे गोटे स्वप्न देखे हेबो सेटा गोटे स्वप्न क्रिएट करा जाए निर्वाचन रे किंतु निर्वाचन पर बजेट प्रोसेस रे आसे डेवलपमेंट रे आसे सेति जहाँ जहाँ स्वप्न देखई थिले सेही स्वप्न को केमिति टिके रूपांतरित करा जिवो ता पई जहाँ जहाँ स्टेप से गुडा नेक्स्ट बजेट रे आसे आउ प्रथम निर्वाचन वर्षर बजेट रो प्रथम 2-3टा बजेट टिके कठोर बजेट रे कारण तापर सॉफ्टवेयर बजेट जो करिया फेज पड़ियो देखि वर्तमान आमे जाउछन जेबे आमे जेबे जाउछि किंतु वर्तमान सर ए कठोर ए बजेट माने जति की वोट जदि आपण देखिबे गोटे पॉलिटिकल पार्टी पाउछि बजेट रे सेति की सस्ता बांटीबे कि कोन बांटीबे ता परवर्ष समय अर्थनीति बिगड़ जिवो तळकु पळे आसीबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे जाउछि कि निश्चित भाव में होची आपण जेते जहाँ कहतु भारतीयंकर मानसिकता है आमे सरकार कौन देला भारतीय माने मते लगे टिके टिके भूली जाती जे सरकार माने कौन आमे माने जो लोक प्रतिनिधि करुचे से माने होचंती सरकार तो आमरी पैसा आमको दौरान किंतु सरकार मते कौन देला से जो पाइबार आशा अन्य देश जो पैट्रियटिज्म आप गोटे एत बड़ जिनस उठे यहाँ बजेट ये कही हेनी भारत में जो पैट्रियटिज्म इंडेक्स कराइला से बहुत कमी जाइए आपण अन्य जो देश दिखाँ से कहे कंट्री फास्ट किंतु आमर देश में बर्तमान धीरे धीरे होती मु फास्ट मते कौन मिलला यही जो मानसिकता यहाँ मत लगुच टिके टाइम लगे श्रीयुक्त खुंटिया मुझे आपठू अति संक्षेप में जाना चाहिए जे सबू जहाँ आम आलोचना करुले आयकर सीमा को लेकर समस्त मन में साधारण लोक जमी मु फास्ट मोर आयकर उपर कौन मत रिहाती मिलूँ बा कौन मिलूँ ये जो पेंडेमिक पर महामारी पर ये लोक बेसी क्या है आयकर टे सीमा बढ़ा क्योंकि आप देखूँ आयकर सीमा बढ़ले कहीं इनकम कमिबनी इनकम कमिब तापर मु किंतु जमा माने आयकर कमेबा सपोर्टे मु बहुत दिन नुह आपन कहले 2.5 लाख बेसिक होती प्रकृत 7-5-6 लाख टंका इनकम कले आप टैक्स दौनी 180 ये सब जाऊँगी किंतु गोटे दृष्टि टंका कैश आए दरकार आप आउ गोटे आय कथा मुझे कहूँ आपड़ कहले जो एग्रीकल्चर टैक्स ना आप बड़ बड़ लोक माने मंत्री पिला मंत्री पिला पिले से 1000 कोटी 500 कोटी टंका आय कर फार्मिंग करी टैक्स पड़नी कहीं मो मतरे यही बजेट हो जो 2.5 लाख आमर अच्छी 3 लाख अधिका जो भावी टिके मत एकमत हो पारनी कारण भारतर 80% लोक यही रिहाती उपर टिके डिपेंड करती पाखे टिके टिके अधिका पैसा हेले से केमती अधिका खर्च करेंगे जदि चाइनार इकोनोमी आम देखी सेटा भी सेमती कले लोकों पाखे 80% लोकों पाखे केमती अधिका पैसा गला चाहिदा बढ़िले एमएसएमई प्रोडक्शन बढ़िला एमएसएमई प्रोडक्शन इकोनोमी प्रोपेल गला जदि लोकों पाखे टिके अधिका पैसा न हो जो पैंडेमिक शॉक रु जदि न बाहर आम जो टिके रिहाती न दे टिके हाथ में सरप्लस न दबा ताल मत लागु इकोनॉमी एते जल्दी कि कोट ना कोटी जे वित्तीय नियंट बड़ी पारे सेपटे जति देखिबे आकु जति हम रिलैक्सेशन कर सरकार पाखरे बहुत प्रकार देखो सरकार जो योजना कले 2,10,000 कोटी डिसइन्वेस्टमेंट रो आनिबे वर्तमान मात्र 14,000 कोटी आनले तो सरकार पाखे बहुत विकल्प अच्छी सबुठू बड़ विकल्प सरकार पाखे वर्तमान जब भारत सरकार पाखे अच्छी होची जमी जदि जमी मोनेटाइज करा जाए मत लगुच 0 टैक्स हो भारत अच्छा सो जो एसेट अच्छी जो पीएसयू गुड़ाक अच्छी से पीएसयू जदि डिसइन्वेस्टमेंट करती मत लगुच एत बड़ फिस्कल डेफिसिट सरकार सहूचंती विरोधी माने तांकू आकु नेकी गाली करछन भारत बिकी देला आपण एई भली परिस्थिति भितर सरकार को मत लगुच से मानसिकता आ नाही एयर इंडिया रे आपण देखिथिबे एबे जते भी डिसइन्वेस्टमेंट हेची लोक माने ताकू भलरे नैछंती जते प्रकार एलआईसी वर्तमान मार्केट को जीव देखिबे समस्त इन्वेस्ट करिवे देखिबे नालको जदी आउरी डिसइन्वेस्टमेंट करा जाय लोक एबे एक्सेप्ट करलेनी जे जदी आमको आगू बढ़ियार अच्छी ताहले लोकंकर पार्टिसिपेशन दरकार सो लोक से देशर वेल्थ क्रिएशन भी हम सो मत लगुच बर्तमान निश्चित भाव लोक समालोचना होची दिन देखला बेले बर्तमान आम सब विदेशी कंपनी को आम सब कथा बिकी प्रॉब्लम कौन होची आमे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आणुचे आमे रिटेल इन्वेस्टर पाक जाऊने आमे कहूचे ये कंपनी चले पारने या गोटे विदेशी कंपनी देदेबा सेमती हवा कथा ना आमे आमर भारतीय मान को शेयर दवा कथा आमर भारतीय मान पर एतिकी अच्छी पुंजी आउ एतिकी अच्छी तांकर दक्षता
जे पृथ्वीर सबुठ बड़ बड़ कंपनी मैनेज कर तो आम देश कहीं मैनेज कर किछि ग्रुप एठी डोमिनेट करिवे कि जेमती अंबानी अदानी कथा सामना को आसे टाटा ग्रुप रो कथा सामना को आसे पुणी तो ए माने डोमिनेट करिवे सेही कथा मु कहउतली आपण टाटा अंबानी कहतु भारत रे कि भारत पृथ्वीर बड़ बड़ एमएनसी आसिक स्ट्राटेजी मु आपण स्ट्राटेजिक इन्वेस्टर कथा कहू नाही मु कहूची आमर डोमेस्टिक रिटेल रे आमर जदि प्राइवेट पार्टिसिपेशन करा जाए लोक मानकु दिया जाए आपण माने आसंतु पैसा लगांतु इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड करांतु पैसा लगांतु देशर अभिवृद्धि हबो देखिबे भारतीय माने समस्त इन्वेस्ट करिवे किंतु सर डिफेंस को जदि आपण देखिबे एमते डासल्ट एविएशन आसी कि एठी विनियोग करूची किंतु हाल को हमें देई पारने ये गोटे कथा मध्ये आसिला तो ताकू नै कि कोन मत देखो डिफेन्सटा आम ये बजेट रे डिस्कस कर डिफेन्स रे बहुत जिनस अच्छे मुझे डिफेन्स कंपनी थी डायरेक्टर 6 वर्ष थी डिफेन्स रे आमर नेशनल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्यूरीटी गोटे बहुत बड़ जिनस से भारत सरकार को प्राइवेट हो कि अन्य कौन देश को दवा आगु बहुत स्ट्राटेजिक डिसीजन ना पड़े कारण डिफेन्स गोटे एमती सेक्टर जोटा कि देशर सुरक्षा पर डिपेंड करे ताकू आमे डिबेट माध्यम रे रिजॉल्व कर परिबन कंप्रोमाइज कर परिबन मो जानिया को चाहिबी जे जहा कथा कहउतले जे वर्तमान जो महामारी पर लोकों पाखरे पैसा नाई तांको हाथ में पैसार आवश्यकता अच्छी आपन कहते जे आप सपक्ष नुहति आयकर सीमा बढ़ा सपक्ष नुहति किंतु आप अनुभव करूना कि लोक पाखे पैसा आसवा दरकार कौटू आसो पैसा आपण आड़े जदि कमेदेवे साढ़े रेवेन्यू कमीगला मो मत इनफ्रास्ट्रक्चर आप गाँव में समस्या आपण इनफ्रास्ट्रक्चर गाँव में एनआरजीएस फंड हो कि आपणकर रास्ता हो एटा कोल्ड स्टोरेज हो गोडाउन हो से टंका आनी खर्च कर पड़ो आप कमेदेले पुणी साढ़े इनकम कमिज तेणु मो मतरे जो टंका आसो से टंका रूरल इंडिया रे आपण रास्ता हम कोल्ड स्टोरेज हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम जो जो कैपिटल आसो से इन्वेस्टमेंट ऑक्सफाम गोटे परामर्श दौर भारत सरकार को जो मैंने अधिक कैपिटालिस्ट अच्छा जो मानकर अर्थ ग्रो होती 35% कहुच्छी पैंडेमिक रे से किसी अधिक लगा जाऊ ये कथा टी केमती आप देखुं जो पैसार कथा आप कहले जोटा खर्च करेंगे सरकार बा से आकार में कहतु टैक्स आकार मुझे एकमत जो मैंने अधिक इनकम कर पैंडेमिक पे टैक्स पड़ू शेष भाया पड़ू कहीं आम एत इनकम करें देश पे किसी दबुनी तेणु मो मतरे जो टैक्स पड़ो जो मैंने सुपर रिच जो मैंने अधिका इनकम कर कोटी टंका कि टंका इनकम तार होपर पैंडेमिक टैक्स पड़ू टैक्स आधा हो से मैंने एंजॉय करेंगे से टंका आसिले गरीब लोक टे साहय पाइब तेणु आम जो पपुलर होगापी जो सब छाड़ी प्रेसर पकाउं मो मतरे टैक्स ये टैक्स पड़ू पैंडेमिक टैक्स पड़ू से जो कलेक्शन हम से कलेक्शन आड़े तले खर्च हो तेणु जो आप कहते 10,000 कोटी कि 1,000 कोटी टका इनकम कर सो कल्ड आप जो फार्म इनकम से टैक्स कहीं देवें टैक्स मात्र 3 मिनिट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर एथर जो नियारा बजेट उपस्थापन करेंगे समग्र देश कोरोना महामारी पर बहु आशा नहीं बजेट को अपेक्षा कर बजेट को लेकर अतीत में जिते आलोचना हो ना बजेट को लेकर एथर सबुठ अधिक अर्थनीतिज्ञ माने बजेट को लेकर आलोचना कर आशा रखिंट आशा करा ए बजेट आगामी 5 वर्ष आगामी 3 वर्ष अर्थनीतिर अभिवृद्धिर जो रास्ता ताको देखैबो बोली समस्ते आशा रखिंट साधारण लोकटे आशा रखी जे बजेट रु ताको कौन सुफल मिलिबो ता हाथ को पैसा आसो कि बजेट रु तार जो आयकर रही से आयकर उपर से जहाँ दौला टिकस दौला से टिकस ह्रास पाइब कि ये जो दरदाम बढ़ुची से दरदाम कमिब कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो असुविधार सम्मुखीन होची लोकटे ताहाकू आड्रेस करा जिवो कि विभिन्न प्रकार प्रसंग रही किछि समय पर मात्र 2 मिनिट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर बजेट उपस्थापन करेंगे अविनाश निश्चित भाव में शिशिर विदेश में कम करुवा लोकटे आज अपेक्षा रखुच्छी भारत वर्ष में तापाई कौन अधिक कर्मसंस्थान मिल पार रिसर्च से विदेश को जाऊँगी भारत वर्ष में रिसर्च रे आहरी आगू जापर कि जो लोकटी भारत में पाठ पढ़ी कि बाहर को जाऊँगी कर्मसंस्थान से चाहूँगी भारत में ताको अधिक टंका मिल पार कि अधिक साधन मिल पार कि ए तमाम घटना आसूची कर्म निजुक्ति अपेक्षा रही लोकटी जिते दादन खटिया जाऊँगी गोटे राज्य को आउ गोटे राज्य को आम देखी कोरोना महामारी समय जिते लॉकडाउन सटडाउन भाई परिस्थिति सृष्टि आमको व्यक्तिगत भाव में फोन कले केमी आम पहुँचू ओडिशा रे आम पाखे टंका ना पैसा ना अर्थात 15 दिन मासे भितर समानकर परिस्थिति बिगड़ी जाऊँगी पाखे टंका ना से पहुँची पारना घरे ये तमाम परिस्थिति जिते आसूची
से परिस्थिति बाहर गोटे दीर्घम्यादी सूत्र में जीवन को आगू बढ़ाई से केमती बंची पारे प्रत्येक मुहूर्त में पाखे गोटे सुरक्षित भविष्य थी आगामी समय सुरक्षित भविष्य स्वप्न देखी पारे गाँव में चाषबास हो पार्थिव गाँव में जीविका अर्जन करें गाँव में छेली बेपार करें कुकुड़ा बेपार करें एपाई सरकार साधन थी ये ही रोजगार करेंगे शिक्षा टू नहीं स्वास्थ्य पर्यंत एवं रोजगार टू नहीं कर्मसंस्थान पर्यंत ए तमाम घटना को जदि आप देखिए भारत वर्षर आज अपेक्षा जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रित्व में कौन घोषणा हो पारे पेपरलेस बजेट सबुठु बड़ बजेट काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए मात्र किछि सेकेंड अपेक्षा एवं वर्तमान समय आप देखंतु जे आउ रही पाखापाखि अल्प समय बहुत कम समय भितर आसिकी पहुंचुंट निर्मला सीतारमण तांकर पार्टी खोल तो बजेट आरंभ हम ये तमाम घटना भितर सारा विरोधी सरकार सरकारी मंत्री केंद्र मंत्री प्रधानमंत्री समस्त शिशिर अपेक्षा प्राक बजेट बेले जहाँ जहाँ सब आशा करुले ये जो बजेट उपस्थापन हम आ मात्र 30 सेकेंड भितर ये 30 सेकेंड पर जो बजेट उपस्थापन हम से सब कथा स्थान पाउची कि नहीं ये समस्त प्रसंग उपरे लोकंकर नजर रही मात्र 20 सेकेंड पर आपन देखिए राज्य रे देश रे जो बजेट आसूची से नियारा बजेट बोल जहाँ कहुई से बजेट आ मात्र 10 सेकेंड भितर आपण सम्मुख उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एकदम शिशिर वर्तमान समय 11टा समय हो जाइए 1-2-2021 अर्थात फेब्रुआरी 1 वर्तमान समय 11टा समय एवं वर्तमान समय टाइम गति कर भारत वर्षर नजर थिला एही समय को जे लोकसभा किभली भाव में वर्तमान समय संसद में बजेट उपस्थापन होची आमे चित्र सीधासलख आपनक सामने आणिबु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर बजेट उपस्थापन करेंगे तमाम विरोधी शासक दल एवं जो माने रहिचंती आंचलिक दल ओडिशा भली दल कहतु ओडिशा रे बीजेडी भली दल कहतु बा आंध्र रे कहतु विभिन्न राज्य रे सेंट्रल डिवोल्यूशन रु कौन फंड मिलुची एवं केंद्रीय योजना जो प्रवर्तित होइछि ओडिशा रे बा विभिन्न राज्य रे केमती मारछि बाचस्पति वर्तमान समय आसी पहुंचबे ये चित्र आमे देखौछे जे संसद भवन परिसर रु ये तमाम चित्र वर्तमान समय ओम बिरला पहुंचुंट वर्तमान समय आसी ये हूँ तमाम जति संसद को देखिए केमती हाउसफुल है कि अच्छी समस्त नजर आप बैठ जाए माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज धन्यवाद जी ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ऑनरेबल स्पीकर I present the budget for the year 2021-2022 as introduction. Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces
all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic
just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases.
This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs, operationalization of 17 new public health units, and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings, setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals, and setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with a million+ population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles.
Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI scheme. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution
the ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and rates by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InvITs and rates, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization. Monetizing operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, Airports Authority of India airports in Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs, or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific mechanisms to nudge states to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project
of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Bringing down the logistic costs for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020.
100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Urban infrastructure. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate, and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth, and enhance ease of mobility for urban residents. A total of 702 kilometers of conventional metro is operational, and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience, and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores and 2,092 crores respectively. Power infrastructure. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution companies. I read that sentence again. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies
is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, shipping and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. A scheme for promoting flagging of merchant ships in India will be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single Securities Markets Code.
The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. To instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited, an asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, while continuing to protect the interests of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete.
I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing the threshold for paid-up capital from not exceeding 50 lakh to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened, e-court system shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. During the coming fiscal, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I'm happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets
will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. Government financial reforms. Under the Treasury Single Account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives, I propose to set up a separate administrative structure for them. So the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy,
Again, an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores. I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitwa scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with the e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund
would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. I am happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit, and food schemes for all migrant workers. We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes. For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes and also women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. Honorable Speaker, sir, I now go to the 4th pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states.
Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. Many of our cities have various institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-metric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship, training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative training, intertraining program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques, and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch
carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the 6th pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted,
We switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs. 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided, subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21
and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the FRBM Act, which I am laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals
by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement, if you ask me. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation, which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden,
I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero-coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax-efficient zero-coupon bonds. Affordable housing. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in Part A of this speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc., already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities,
dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by 1 more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year, till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals. GST. Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GST and system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and artificial intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions.
I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber, and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use-based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated
to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cakes, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure हेलो हाँ तुम्हें ऑन करो हाँ 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 हेलो निश्चित भाव में जदि आम कहवा ताले सन हॉस्पिटल कटकर सन हॉस्पिटल जोटा विजु पट्टनायक छक निकट में रही एवं से अंचल अग्निकांड घटी आपण देखुं सीधा सड़क जे पूरा डाक्तरखानार उपर महला केते बड़ आकार अग्निकांड लगी हु हु होइकि निया पूरा उपर महलटा को ग्रास करिछि एवं जदि कहबा ताले कटकर ये जो सन हॉस्पिटल ये विजु पट्टनायक छक निकट में रही एवं से सन हॉस्पिटल उपर महलाटी बर्तमान पूरा पूरी भाव में अग्निकांड निश्चित भाव में आम कहबा बर्तमान पूरा पूरी ग्रास होइछि सबू बर्तमान आम कहबा आकाश को तो निश्चित भाव में बहुत दूर पर्यंत अग्नि व्यापी जाइछि एवं पूरा उपर महलाटा बर्तमान निया जलुछि एवं अग्निशम बाहिनी जदि कहबा समस्ते आसी एठारे पहुंची कटक डीसीपी आसिक पहुंची एवं 4-5 दमकल लगी ए काम पाखापाखि जो बिल्डिंग गुड़िक रही से बिल्डिंग गुड़िक निश्चित भाव में पानी स्प्रे करा जाउछि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम। अच्छा आपण तो प्रत्यक्षदर्शी भाव ए अंचल अच्छा स्थानीय कॉर्पोरेटर आपण केमती कौन केतबेले खबर आसिला प्राय अध घंटा हेब ए खबर आसी निया लगिबार तापर आम सांगे सांगे आमर म्युनिसिपालिटी कमिशनर फायर ऑफिसर एवं डीसीपी को आम खबर देइतिलु एवं खबर देला परे सांगे सांगे तार अधिकारी मैंने आसी पहुँचती एवं सबुठ बड़ जिनस जे हॉस्पिटल भीतर जी पेसेंट थे ठीक समय काढ़ी दिखाई तेणु मु भावुची फायर ऑफिसर मैंने आसिक जो काम कर धन्यवाद से तुरंत ये पदक्षेप नौकरी एवं कौन असुविधा त्रुटि दुर्घटना घटबनी बोली मोर आशा और विश्वास। प्राथमिक सूचना कौन अच्छी एत बड़ अग्निकांड केमती लगिला ओपर महलार जेहेतु से प्लास्टिक यूज बेसी कर किचेन सामग्री थिला तेणु से सर्ट सर्किट होगी निया लगे आम संभावना भावुचु बाकी तल को 4-5 फ्लोर देखा सेठी निश्चित भाव में गुरुतर पेसेंट भी थे अलग नहीं पेसेंट थे इमिडिएटली सब अलग हॉस्पिटल आम जो एम्बुलेंस सेवा द्वारा कढ़ाई तुरंत आम बाहर करदेलु जहाँफल बर्तमान कौन पेसेंटर क्षयक्षति होना बर्तमान दमकल गाड़ी और आखपाख अंचल दमकल आसवा लगी लोक घेरिक रही ना प्राय 3-4 गाड़ी आसिक बर्तमान काम कर कौन असुविधा हेनी मोर आशा विश्वास कारण फायर ठीक समय आसिक जेहेतु पहुँचे फायर ऑफिसटा जेहेतु आमर नियरेस्ट तेणु आमको